Hello everyone and welcome to this session. Special welcome to everyone who is here for the first time and for whom this is our first interaction. Vaishnavi, Khale, Vicky, Kamal, you're all very welcome. Good evening. Today we will talk about essay writing, and there is a lot of mystery about essay writing and people say it's subjective. लोग कहते हैं कि ऐसे का कुछ वो नहीं होता. There is no set pattern. It cannot be prepared like GS और उसका या मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं या बहुत कम आते हैं. And there are some people who constantly get good marks, some people who constantly do not get good marks in essay. That is the trend. And this is a trend where I think it is true. I have seen this to some extent in many cases in the people who have cleared the exam. So what I will do today, आज का जो सेशन है, अंजलि, किशन, हेमलता, शुभांकर, all very welcome, रेखा. आज के सेशन में आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू सम ट्रिक्स एंड सम हैक्स. बहुत इफेक्टिव शॉर्टकट्स हैं that will help you in doing various things. And I will also introduce you to some pieces of writing. अब कुछ लोगों के आज हम essays भी देखेंगे. हम देखेंगे कैसे लिखते हैं वो, अच्छा क्यों है, बुरा क्यों है, what makes it good, what makes it bad, and then we'll have some very practically oriented, actionable session is what I'm planning for this session today. The first thing I need to tell you, because we have a lot of ground to cover, इसलिए मैं थोड़ा सा fast चलूँगा. Move fast, you move with me, and whenever you feel the requirement, take notes if you want. Otherwise, these tricks and these techniques I will share with you on the email. If you do not know about this, you will find these emails I send in my free mentorship program. There is a link, it is entirely free. You can just join and you will get these updates. Most of my students, in fact, who are here are from that program. Let's get started. Very basic things. I will not spend much time on this. बहुत ही basic चीज़ है, आपको सब कुछ पता है. 4 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होंगी ऐसे के पेपर में. मल्टीपल टॉपिक्स आएंगे, आ सकते हैं. बहुत सालों से ट्रेंड ये है कि देयर आर 2 सेक्शंस, यू हैव टू राइट 2 एसेज. 2 एसेज से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है बिकॉज यू हैव टू थिंक मोर. उतनी डबल ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, डबल रिवीजन करनी पड़ती है और 2 अलग अलग टॉपिक के बारे में सोचना पड़ता है. तो ये चैलेंजिंग कर देता है थोड़ा सा ऐसे को, बट कोई बात नहीं, इट इज़ नॉट अ थिंग बिकॉज नाउ एवरीवन इज यूज्ड टू इट. Arranging ideas in an orderly fashion. Arranging ideas in an orderly fashion. These 4, by the way, I didn't make this graphic just out of thin air. I made it because यही 4 फैक्टर लिखे हुए हैं यूपीएससी सिलेबस में. If you open the UPSC notification, official UPSC notification, go through the essay paper requirement, आपको exactly ये शब्द मिलेंगे. These are quoted from that notification. And when it says arrange ideas in an orderly fashion, अब orderly fashion का क्या मतलब? What does it mean, Vikna? What does it mean, Shuvista, Diksha? Orderly fashion का क्या मतलब? आइडियाज को ऑर्डरली फैशन, इसका मतलब है स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कैसे करा गया है आइडियाज को. एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं स्ट्रक्चरिंग का, जो मैं कभी कभी देखता हूँ मेरे स्टूडेंट्स के एसेज में. व्हाट दे विल डू, दे विल से इकोनॉमिकली दिस, फिलोसॉफिकली दिस, जोग्राफिकली दिस, हिस्टोरिकली दिस. वो ऐसे डायमेंशन में उसको सेग्रीगेट कर देते हैं और वो आइडिया हो जाता है. इज दैट द बेस्ट अप्रोच? नो. And we will see why not. We will see different type of essay topics require different type of structuring. वो dimensions के हिसाब से structure करना सिर्फ एक तरीका है. There are much better ways, much more effective ways. We'll see. Then on third, you will see keep closely to the topic. ये important है. I will also give you examples. अभी हम example देखेंगे लोगों के जहाँ पर ये नहीं होता. And we will detect क्यों नहीं हो रहा है. And then we'll see that it actually does make an impact. So we'll do this also. The fourth is write concisely. अब इन दोनों पॉइंट्स का ना सिमिलर मीनिंग है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये जो पॉइंट नंबर 3 है, कीप क्लोजली टू द टॉपिक, इट हैज टू डू विद कंटेंट. हमको टैंजेंट्स पे नहीं जाना है. समटाइम्स आई रीड एसेज एंड आई एम गोइंग टू शो यू एन एसे राइट नाउ. आई रीड एन एसे और उसमें पूरी की पूरी एक कहानी लिखी होती है, एक पूरा एनेक्डोट लिखा होता है. राम woke up one day in the morning feeling so and then he went to the supermarket and then he did this and then he had this experience and so on. So after 2 or 3 pages of the whole story, they come to the point, and that is not a very effective way of keeping closely to the topic. जो यूपीएससी हमसे चाहती है, उन्होंने हमको जो 1000 वर्ड्स का वो दिया है, जो वर्ड लिमिट, उसका मतलब ये है कि वी हैव टू डू जस्टिस. हमको काम की बात करनी है उसमें. ऐसे राइटिंग में कंटेंट की कमी नहीं है. आपको कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा, आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होंगी उस टाइम पे.
इशू होगा क्या नहीं लिखना है. इट इज अ टेस्ट ऑफ फिल्टरिंग व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू राइट. जैसे वेग फिलोसॉफिकल टॉपिक्स आते हैं जिनको अभी हम देखेंगे, जिसमें कुछ भी लिखा जा सकता है. फिलोसॉफिकल एक्सपीरियंस जैसे लाइक मेहनाज इज मेंशनिंग, कुछ भी लिखा जा सकता है उनमें. जस्टिस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, इस टाइप के वेग सब टॉपिक्स आ जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी विल सी वन एग्जाम्पल राइट. ओके, नाउ लेट अस डू एन एक्सरसाइज. हम एक एक्सरसाइज करेंगे. आई एम गोइंग टू शो यू two essay introductions. I will show you two essay introductions. I want you to honestly tell me which one is better and why. And later I will tell you which one belongs to whom. Okay? So this is our first example. Let us read this. आराम से इत्मीनान से 2 मिनट लगा के इसको पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं क्या लिखा है, और इसके बाद एक 0 to 10 एक रेटिंग देते हैं इसको. Let us give it a rating from 0 to 10. I will try to also read it for you. आप इसको बेशक जूम करना चाहें, और अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो you will be able to understand because I will read it for you. ऐसे टॉपिक है philosophy of wantlessness is utopian while materialism is a chimera. ये ऐसे टॉपिक अभी पिछले साल के यूपीएससी मेंस में पूछा गया था. Philosophy of wantlessness is utopian while materialism is a chimera. स्टूडेंट लिखते हैं, द स्टूडेंट राइट्स, मिस्टर वॉटसन वॉज नॉट इन अ मूड ऑफ टीचिंग. चिल्ड्रन इन द क्लास वर hurray. For a moment, he decided to let children speak about their ambitions. Many spoke about Ryan, and Peter gave strange answers. Ryan claimed that desire is the root cause of all suffering. He wants nothing. Diametrically opposite, Peter claimed to be the wealthiest. Cut to 50 years later, Mr. Watson is on his deathbed, and both Ryan and Peter have come to see him. Mr. Watson said he may die anytime. They both replied in unison, "You will die, but live in our hearts, sir. We are doomed to die while we are still alive." The childhood perspectives exhibited by them appear to be poles apart, but the fact that both made a mess of their lives underscores a bitter truth. In a world growing by leaps and bounds, dealing in extremities hardly helps. Wanting nothing may take us nowhere, but wanting everything will take us to a place where nothing can be seen. What do you think, honestly? What do you think about this introduction? ऐसा टॉपिक मैंने आपको बता दिया. ऐसा टॉपिक है फिलोसफी ऑफ वॉन्टलेसनेस इज यूटोपियन, मटीरियलिज्म इज अ काइमेरा. ऐसे टॉपिक ये कह रहा है, ऐसे टॉपिक इज सेइंग कि ये जो आइडिया होता है कि वी शुड बी वॉन्टलेस और डिजायर नहीं होनी चाहिए, एंड डिजायर इज अ बैड वर्ड, दैट वी शुड नॉट हैव एनी ग्रीड एंड डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल इविल. ऑल दैट एंशियंट बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड ऑल दैट डिजायर बैशिंग एज आई कॉल इट इज द टॉपिक. ये टॉपिक कहता है वॉन्टलेसनेस की फिलोसफी आइडियलिस्टिक है, रियलिस्टिक नहीं है, पॉसिबली नहीं है अचीव करना, सिर्फ बातें हैं, थ्योरेटिकल चीजें हैं. जो उसका ऑपोजिट है मटीरियलिज्म, वो भी नकली है. मतलब इट इज बोगस, इट डजंट वर्क, इट इज अ काइमेरा. काइमेरा का क्या मतलब? काइमेरा का मतलब कि वो लगता है कि चीज अच्छी है बट निकलती कुछ और है. वो इट इज सपोज टू बी समथिंग, इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग एल्स. दिस फिलोसफी ऑफ मटीरियलिज्म. और इन दोनों फिलोसफी के बीच में ये भी गलत है, वो भी गलत है, तो क्या है सोल्यूशन? दिस इज व्हाट दिस टॉपिक इज सेइंग. अब आफ्टर रीडिंग दिस इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर जेन्युइन ओपिनियन ऑन अ स्केल of 0 to 10? On a scale of 0 to 10, what would you give this introduction? What is your honest score? Please put that score in the chat so I know what you are thinking. And after we have rated this, we will talk about a different example, and then I will tell you which essay belongs to whom. Let us see what you think. यस, हेमलता इज राइट. हेमलता कह रही है कि इट इज अनलिवेबल टू रिलेट टू द ऐसे टॉपिक, और ऐसे टॉपिक और इंट्रोडक्शन में कोई तालमेल ही नहीं है ना. देयर इज नो क्लियर, सो पीपल आर रेटिंग इट 4, 5, 6, एंड आई एग्री. मुझे लगता है कि ऐसा ही स्कोर यूपीएससी भी देगा इस ऐसे टॉपिक को इफ इट कम्स इन द ऐसे पेपर. एंड आई डोंट थिंक दैट द यूपीएससी विल बी वेरी काइंड, बिकॉज बिल्कुल ठीक बात है आपने जो पकड़ी वो ये है कि वो ठीक से वो तो नहीं कर रहा है ना एक्सप्रेस. It is not expressing the requirement of the essay. बिल्कुल आई एग्री. मतलब आई वुड हैव गिवन इट 3.5 to 4. मेरा भी 4 के आसपास ही बैठेगा जो एस्टिमेट होगा. अब लेट अस सी द सेकंड एग्जांपल. ये वाला देखते हैं एक बार. लेट अस लुक एट दिस. लेट अस टेक अ मिनट टू रीड इट एंड देन सी व्हाट एग्जैक्टली शी हैज रिटन.
I will read it out for you. थोड़ा सा इसका text छोटा है, but you will be able to understand it from my voice. The essay topic is modern life is nothing but a rat race. Modern life is nothing but a rat race. And the writer has written, on a sultry Monday evening, Ajay alighted, what has he written? Alighted from his bicycle in the parking lot of his engineering coaching institute and walked towards his class indifferently. He didn't want to be an engineer. His interests laid in journalism, but his father, a middle-class shopkeeper, wanted him to compete with the high society children and earn a handsome package. On his way, Aryan, his batchmate, cried his name and ran hurriedly to join him, encircling his right hand around Ajay's shoulders and flashing the new iPhone on the other. Ajay stared at it in admiration with starry eyes. That night at home when he demanded the same device from his father, he had to bear the wrath of his frustration. His small business was struggling to cope with online marketplaces. He was also disappointed with his son's distraction. Modern life is characterized by advancements in technology, innovations, and a rapid progression of beliefs and ideas. It denotes a remarkable shift from the traditionalist, minimalist lifestyle of contentment. Modernity permeates all spheres of life: education, health, food and clothing, habits, social relations, employment, societal, etc. Rat race, a buzzword of modern times, is a spontaneous phenomena arising out of the competitive reel to outburst others, the competitive zeal to outbest others. In the pursuit of reaching the pinnacle, man ends up losing himself. So ये दूसरी introduction है. This is the second introduction. Now, which one do you think is better and why? And also, what do you think about this? Why? What do you think about this particular writing by this writer? Do you think that she did a good job? And I'll tell you who this essay belongs to. This is writing of my student Akansha, who secured 208 rank or something this year, and she's now in the I.R.S. And she used to write well. I was always, have her example. अच्छा लिखती थी. She has a good flair, and she got very good marks in essay also. But what do you think about it? Supriya, you'd give it an 8. It's a very high score, Supriya. I don't know if I would give it an 8. Second is better, no doubt about it. At least she is on the point. She is on the point. And she is talking about the essay topic. Essay topic कह रहा है rat race. At least उसने rat race को define किया. उसने पहले rat race को भी define किया. उसने the other term also, modern life को भी उसने define किया. Then she started to illustrate it. Second one is better, no doubt. But I would honestly, not give it 8. I would give it maybe a 6. But this is definitely the better one of the two. Now my point, ladies and gentlemen, is this. Now we'll start talking about the hacks. ये दिखाने का पॉइंट ये था कि बहुत अच्छे ऐसे में 2 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं हमको फंडामेंटली. वी नीड टू अक्वायर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल. एक तो हो गया कंटेंट, लिखा क्या जा रहा है, जो ऐसे टॉपिक बोल रहा है क्या हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, क्या उसका कंटेंट आता है हमको. जरूरी नहीं है कि आता हो. इट इज नॉट एट ऑल गिवन. हमको लगता है कि हम कुछ भी लिख देंगे, दैट वी कैन डू क्रिएटिव राइटिंग एंड वी कैन गिव अवर आइडियाज, बट ऐसा होता नहीं है. बहुत ऐसे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट सबसे परफेक्टली बैठता है, या हमको वो पता होता है या हमको नहीं पता होता. तो कंटेंट तो एक, देयर इज वन एलिमेंट. द अदर इज हाउ इट इज प्रेजेंटेड, लिंग्विस्टिक. तो कंटेंट एंड लिंग्विस्टिक, क्या कंटेंट है और कैसे प्रेजेंट करा गया है, कैसे लिखा गया है, क्लियरली एक्सप्रेस करा गया है या नहीं करा गया है, ठीक से स्ट्रक्चर करा गया है नहीं करा गया है, रीडर का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या रीडर समझ पा रहा है क्लियरली और सिंपली पैराग्राफ टू पैराग्राफ की क्या पॉइंट क्रिएट करा जा रहा है, व्हाट इज द पॉइंट बीइंग मेड. ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ये लिंग्विस्टिक हैक्स में आ जाते हैं. टुडे व्हाट आई विल डू, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू 2 टाइप्स ऑफ हैक्स एंड विल टॉक अबाउट कंटेंट हैक्स. हम कंटेंट कैसे क्रिएट करें एसेस के लिए. ये हम पूरे के पूरे 10 साल तो हमारे पास नहीं है अवेलेबल कि हम किताबें पढ़ें और अपनी नॉलेज बढ़ाएं ताकि हम इन सब टॉपिक्स के बारे में जानें. हमको तो बहुत शॉर्टकट चाहिए. वी नीड इट टू, yes, we have to address the demand of the question, but we don't have the time, for essay. If we start to acquire the content, हमको बहुत साल लग जाएंगे. हमको शॉर्टकट चाहिए. We need to be able to use the content already in our heads. हमारे माइंड में बहुत सारा content already है.
और उसको यूज करना, उसको अपने अंदर से एक्सट्रैक्ट करके ढंग से लिखना, वो एक स्किल है विच आई विल ट्राई टू टीच यू टुडे। नंबर 1, कंटेंट हैक। सिंपल, ये वाला बहुत सिंपल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस हैक को जानते हैं, बड़ा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, दिस इज वेरी बेसिक, आई एम जस्ट गेटिंग वार्म्ड अप। इट्स कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन इज अ वेरी सिंपल है। डीकंस्ट्रक्शन कहता है कि यूपीएससी ऐसे में कोई भी ऐसे टॉपिक आए, in the UPSC essay, let there be any essay topic, 99% topics will be divided into two parts. दो concepts के बारे में होगा. It will be about two main things. Let us call it thing 1 and thing 2. Let us call it thing 1 and thing 2. Suppose, example, I say the essay topic is technology cannot replace manpower. Technology is thing 1, manpower is thing 2. The essay topic is about these things. Modern life is nothing but a rat race. It is about two things, which modern life is one concept, rat race is one concept. You have to see whether they are the same thing and what is the relationship between them, etc. etc. Deconstruction का जो point है, very simple point. Point ये है कि जब हम thing 1 और thing 2 को isolate करते हैं, तो हम ऐसे topic भूल सकते हैं. Let us forget the essay topic itself. वो statement, ऐसे टॉपिक की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, हो सकता है वो थोड़ी मेटाफोरिकल स्टेटमेंट हो. वी कैन इग्नोर द स्टेटमेंट. एक बारी सिर्फ आइसोलेट करना चाहते हैं हम कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट कौन सा है. व्हाट आर द टू कॉन्सेप्ट्स दैट इट इज अबाउट. दिस इज मेनी ऐसे टॉपिक्स ऑफ प्रीवियस ईयर यूपीएससी व्हिच आई हैव डीकंस्ट्रक्टेड. अब ये आई विल शेयर विद यू ऑन ईमेल. इसमें कुछ नहीं है, देयर आर जस्ट ऐसे टॉपिक्स एंड यू सी द इन द रेड आई हैव डिवाइडेड इट इनटू थिंग 1 एंड थिंग 2. You will see that most of them can be divided. बहुत सिंपल सा हैक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. कोई भी ऐसे टॉपिक होगा, आप उसको थिंग 1 और थिंग 2 में डिवाइड कर देंगे. we'll have more discussions about it. This is the more important hack. This is the more important hack. It is called structured brainstorm. अच्छा, assume कर लेते हैं कि हमको थिंग 1 समझ में आ गया, हमको थिंग 2 भी समझ में आ गया. हमको पता है कि टेक्नोलॉजी है थिंग 1, मैन पावर है थिंग 2, फिलोसफी ऑफ वॉन्टलेसनेस है, फिलोसफी ऑफ मटीरियलिज्म है थिंग 2. इस टाइप के दो हमारे को कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं समझ में. अब इनके बारे में कंटेंट कैसे क्रिएट करा जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या नहीं लिखना है. और जब मैं कोई इस टाइप के ऐसे टॉपिक एनकाउंटर करता हूँ, व्हेन आई एनकाउंटर these words, when I encounter the words wantlessness, what happens in my mind? I think about all these things, you know, there's a jumble of concepts which come to my mind. Ekdam se, it's a lot of concepts which come to my mind. Buddhism, Jainism, Ajivika, minimalism, etc., etc., etc. But the ideas don't come in a proper format. Ideas jumble होके आते हैं और पूरे ideas कभी नहीं आते हैं. I want that from inside my mind, from inside my knowledge base, जितना भी knowledge है मुझे, जो भी है, I should be able to find the perfect content for that word. This is structured brainstorming, and it says just take thing 1 and ask yourself 12 questions. 12 questions पूछेंगे हम उस टॉपिक के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में, and we will just see कि कौन से keywords आ रहे हैं माइंड में. It is a way to extract your own knowledge and put it in a structured way so that you can use it in your essay later. That's all it is, nothing fancy. So I'm going to ask you these 12 questions. And let me ask you these 12 questions on the essay topic which we just discussed. Philosophy of Wantlessness and materialism. Wantlessness and materialism. Wantlessness is thing 1. Vauntlessness, lack of desire. And materialism is thing 2. Now I ask you, I'm going to ask you what other keywords can you think of when I ask you this question? When I keep asking you these questions, you keep writing in the comments. I keep asking you the questions, you keep writing in your comments. Is that a deal? All right. Let's do this then. The first question I want to ask you. The first question I want to ask you about wantlessness. Wantlessness. Where have you heard about wantlessness before? Just give me the keywords. जो भी keywords दिमाग में आते हैं वो बताइए बस. Just put them in the comments. That's all we have to do. Nothing more. Easy.
Wantlessness जब हम सोचते हैं, think about the word wantlessness. What topics come to your mind? That is all I'm asking. Once you figure that out, write those keywords in the comments. Let this be a collective brainstorming exercise. हम लोग सब साथ में बैठ के एक बारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, देखते हैं कितने आइडियाज निकल पाते हैं. लेट अस सी कितने आइडियाज ऑलरेडी हैं हमारे माइंड में इस कॉन्सेप्ट को लेके. फिर देखते हैं अगर हमको कुछ स्पेशल नॉलेज की जरूरत है या नहीं है. बुद्धिज्म, वेरी गुड. बुद्धिज्म, स्पिरिचुअलिटी, गांधी जी, मदर्स, अरुणा, अभिनव, वेरी गुड, बहुत अच्छे. मिनिमलिज्म, वेरी गुड, वेरी नाइस. एग्जिस्टेंशियलिज्म, इंटरेस्टिंग, मे और मे नॉट कोरिलेट बट गुड वर्ड देयर. डिटैचमेंट, बहुत अच्छा वर्ड है. समम बोनम, भक्ति एंड सूफिज्म, ठीक है. अब ये जो कीवर्ड्स आप क्रिएट कर रहे हैं ना, यू राइट दीज डाउन. You take a paper and pen. You remember I told you to bring a paper and pen. I don't know if you brought it, but I did bring it for me. I just want you to write them. Divide your paper into half. Like put a line across it, and you write wantlessness here, wantlessness, and just take a note of these keywords. These excellent keywords which are coming. Bhagavad Gita, Buddhism, peace. It doesn't matter. Take any piece of Upanishads. Very nice. Shankaracharya, Vedanta. Non-violence, very nice, very good. Diksha, very nice. Let's be freedom. Okay, good. So we'll write this down. This is just the first question. I have asked only the first one question. My next question is this: what is the importance of wantlessness for human beings? What is the importance of wantlessness for human beings? Simple question. Take my question, put it in your head. Your brain will give some words. It will output some words. Tell me those words. What is the importance of wantlessness, philosophy of wantlessness for human beings? Freedom, you say. Stoicism, Varsha says. What is the importance? The importance पूछ रहा हूँ मैं. क्यों होना चाहिए wantlessness? क्या होगा उससे? क्यों अच्छा है वो? Importance क्या है उसकी? क्यों? Why do we need it? Why should we entertain it? Peace of mind, बहुत अच्छा, excellent. Peace of mind. I will write that down. Peace of mind. Sufferless life. Sufferless life, though, I know what you mean. It is the end of suffering, and all the Buddhist idea of the desire is the root of suffering is the first noble truth. But ठीक है, peace of mind बहुत अच्छा word है, वो हो गया. और क्या है? Diksha is saying humanism, enlightenment. These are good words. Enlightenment, detachment, asceticism, salvation. Do not expect anything. The lack of expectation, peace तो चलो we already have it. We will work, happiness, non-violence. कोई और इंपॉर्टेंस है उसकी आपको जो दिमाग में आ रही है? नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग. प्रियंका, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग से क्या होगा? फायदा क्या है? वॉन्टलेसनेस की फिलोसफी क्यों करूं मैं फॉलो? This is my question. That is the type of content I want you to think about. Peace and low crime in society. So low crime is interesting. Complexity कम हो जाएगी लाइफ में. Love will increase, compassion will increase. ठीक है, fine, no problem. Let me ask you the third question. What is the opposite of wantlessness? Let me ask you the fourth question. What is the opposite of wantlessness? What is the opposite of wantlessness? Wantlessness का जो opposite word, when you think about it, what word comes to your mind? I think the essay topic already tells us one such word, but there may be other words also. Just because we ask this question, हमको ideas आ जाएंगे. Greed, very nice, very nice. वरिंद्र, wantlessness, और भी हैं इधर बहुत अच्छे words हैं, बहुत अच्छे concepts हैं जो हमको मिल जाएंगे. Greed तो है ही. Good. What else? Materialism, agreed. 100% agreed. Materialism is definitely one of those words. Desperation. Desire तो है. Wantlessness का opposite is desire. Yes, Hedonism. Hedonism is an idea which says, for example, just my 2 cents here, is the idea, which says that life का purpose कुछ नहीं है. There is no purpose to life, no higher meaning to anything.
एक बारी लाइफ मिलती है और उसको सिर्फ एंजॉयमेंट में बिता देना चाहिए। जितनी देर एंजॉयमेंट में बिताई आपने अच्छा करा, जितनी देर नहीं बिताई आपने टाइम वेस्ट कर दिया। यू शुड जस्ट एंजॉय, यू शुड जस्ट परस्यू प्लेजर। hedonism is the pursuit of pleasure. Yes, very good. Ethically good. I remember that from, I remember you are taking that from one of our classes we did back then. Very good. Belongings. Okay, good. जो भी है लिख लीजिए. Write them. Write them. Let me ask you the other question. Is there an ethical question associated with wantlessness? What could it be? Is there an ethical question associated with wantlessness? What could it be? Ethical question मतलब कुछ inherently right या wrong है कुछ इसमें wantlessness में. Think about it. कोई अगर word आता है तो बताइए. Charvak purposely, Charvak philosophy, you mean Aruna? Yeah, that's good. Charvak is definitely hedonistic philosophy. Yeah, for sure. And it is actually a valid answer to the fact that life is very absurd. It doesn't have any meaning. Who knows? The Charvak might be correct. But that's a topic for another discussion. I can spell it. It is Hedonism. Hedonism. Willingness to work for the good. Okay. Lawness. Lawness. Maybe say the rule of law. Law and order. Maybe. Neglection. Antodaya. Desire. All right. Fine. Take the keywords. Good keywords. Take them down. What happened in the past, which is a good example of wantlessness? What happened in the past, which is a good example of wantlessness? What happened in the past, which is a good example of wantlessness? मुझे तो एकदम से कुछ आ गया है माइंड में. Let us see कौन बोलता है. What is a good example of wantlessness which happened in the past? I believe I have something to say about that. You know, something which literally every essay I find that mention of COVID. During COVID, when we were in lockdown and in social isolation, we had to figure out to curtail our needs, our social needs, our need to, go out, buy stuff. So many things were not available. Things which we take for granted were no longer available, and all of that made us, I think, better human beings. We connected with our families more. We spent some precious moments with our loved ones. We called up our friends, which we never thought about calling. We took a break from our busy lives because nature forced us to do that. We learned a lot. We gained maturity. We also came face to face with death. And we started to, everyone realized, I think, during COVID, that life का कोई भरोसा नहीं है. That life can last for long or it might not. We do not know. That is a good example of wantlessness. It taught us wantlessness. COVID taught us wantlessness, whether we wanted to or not. That is just my one example. बहुत सारे examples हैं, बहुत सारे अच्छे keywords हैं, like Asha is saying fundamental rights, motherhood, poverty. Correct. I agree. Good. Climate change is also very good. It's a very, very good input to climate change. This is the hack. This is the hack, ladies and gentlemen. This is my demonstration here. This is what I wanted to do. See, हमको पता चल गया था कि हमको wantlessness के बारे में brainstorming करनी है. क्या हमको wantlessness के बारे में कोई philosophical discussion करने की जरूरत पड़ी? हम इन क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने जब when we thought about wantlessness we had some thoughts, but हमारे को स्ट्रक्चर नहीं थे हमारे थॉट्स. अब जब हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे क्वालिटी ऑफ कीवर्ड्स कितने बेटर हो गए हैं. दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ गुड हैक टू हैव. व्हेन यू ब्रेनस्टॉर्म एग्जाम में ऐसे लिखने के टाइम पे, प्रैक्टिस करने के टाइम पे, जब आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे थिंग 1 और थिंग 2 पे, आस्क दीज क्वेश्चंस. ये दिमाग में थोड़ा सा रख के, आई हैव अ shortcut for this also. There's a shortcut for these questions. Use them and you will be able to get many more points अपने अंदर से. ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो है छूट जाते हैं. आपको लिखने के बाद कभी कभार लगता है कि मुझे वो लिख देना चाहिए था, ये लिख देना चाहिए, वो छूट गया मुझसे. I should have written that point. वो नहीं होगा. It will force you to cover all important dimensions of that concept. ये इसका purpose. This is the hack. Very simple hack. Nothing fancy or magical about it, but simple and effective है. Let us come to another hack.
अब इंट्रोडक्शन लिखने का हैक, दिस इज एन हैक टू राइट इंट्रोडक्शन, एंड it is a rather interesting hack because it works. So this introduction writing hack will give you a very good example of what type of introduction to write, but जरूरी नहीं है कि इंट्रोडक्शन वैसे ही लिखी जाए. एक अच्छी इंट्रोडक्शन के इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें. एक बहुत क्विक एग्जांपल करते हैं. Let us do a very quick example because we have to cover many such cheat codes and hacks. आपको deconstruction तो समझ में आ गया. You are smart, you have figured it out. Deconstruction करने के बाद my first question is, अगर मैं आपसे पूछूं जो थिंग वन है उसको सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में आप डिफाइन कर दीजिए. नॉट डोंट डिफाइन इट, एक्सप्लेन इट टू मी. एक्सप्लेन इट टू मी इन 20 words. Wantlessness. What is wantlessness? What is the philosophy of wantlessness? You put it in a proper English sentence. You don't give me keywords now. Keywords आपके पास आ गए हैं, वो keywords आप देख सकते हो. You can refer to these keywords. And can you explain to me in 20 words, 25 words, what is the philosophy of wantlessness? Let us see if somebody would like to attempt it. Let us see if somebody would like to attempt it. In 20 words, in one nice English sentence, what is the philosophy of Vauntlessness? हमने इतनी brainstorming करी इसके बारे में, आइडिया तो लगी गया हमको. हम जानते हैं अपने माइंड में, हमको पता है माइंड में क्या है कॉन्सेप्ट. अब बिकॉज आवर इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट आवर मदर टंग, इट्स आवर सेकेंड लैंग्वेज, तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है हमको एक अच्छे सेंटेंस में, वो चाहिए. What is the philosophy of Wantlessness? Yeah, these are good inputs. Yes, of course, very good. But I'll give you what I would say, and I'll just demonstrate how this works. The philosophy of wantlessness stems from the ancient ideas of Buddhism, Jainism, and Hinduism. It says that the desire is the root of all evil, and that in order to be truly happy, and if happiness can never be found, it is in relinquishing desire in the outside world and seeking the true source of happiness, which is internal. This is my definition, or this is how I would explain wantlessness. अब मैंने एक लाइन में ये बोल दिया, ये मेरा this is my first statement of the introduction. But बहुत अच्छा है. Some people are writing very well. Simon बहुत अच्छा लिखा है. नीलाबे living a simple life free of desires and material gains, बहुत बढ़िया, perfectly चलेगा, no problem. Bhumika, Wantlessness is the one where we have less expectations and more love. बहुत अच्छा, beautiful, no problem. I defined it this way, you define it that way. आपने अपनी बात क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में कर दी. आपने ये बता दिया कि wantlessness क्या होता है, जो आप उसको समझते हैं, the way you defined it. Very. The art of not having unnecessary desires which would have led to problems. ठीक है. Samiksha is saying wantlessness is something which teaches us how to get anything without expecting anything. Very good. बहुत अच्छी बात है. She's hit the nail on the spot. Perfect. बिल्कुल. Nice. This is your first statement. ये आपके इंट्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेटमेंट थी. आपके इंट्रोडक्शन की सेकंड स्टेटमेंट, व्हाट इज थिंग टू, व्हाट इज मटीरियलिज्म, व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ मटीरियलिज्म. कैसे, जैसे आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ये अच्छे से आपने बहुत इंट्रोडक्शंस, दीज आर वेरी गुड ओपनिंग स्टेटमेंट्स बाय द वे फॉर योर एसे. कोई फैंसी एनेक्डोट्स या कोटेशंस या पोएम्स यूज करने की जरूरत नहीं है हमको, जब इतने क्लैरिटी के साथ निकल के आ रहे हैं स्टेटमेंट्स. The art of simple living. Very nice, Rahul. Simple statement with a simple meaning, with a very clear. I like such statements, and I'll say something about them. But what is materialism? Materialism, this is how I would define it. You define it in your own words. Materialism is the philosophy of accumulation, where we seek the source of happiness outside. And it is based on the fundamental assumption that consuming more will lead to more happiness, and is the root of the modern economy, but also the root of the problems of modern life. That's how I would put it. You can, of course, use bigger words, different words, your expression, your emotions, your language
to define what materialism is. But just stick to this simplicity. जो भी आप सिंपल तरीके से बहुत अच्छे से लिख रहे हैं ना, यही चाहिए ऐसे में. Materialism is the art of living, where one tries to find pleasure by fulfilling his own desires. बहुत अच्छी बात, perfect. The desire to get putting value in lifeless things. Good. According to Buddhism, wantlessness is the keyword. No stress and anxiety. All right. Giving primacy to the world of matter. Very nice. Just little abstract, but no problem. Materialism is to consume whatever we get in order to satisfy our wants. How perfect? Jankar. Desire to accumulate things or people with the intention to keep themselves this one. Very nice. Very nicely written. Good simple statements. No fancy anecdotes or poems or sophisticated linguistic maneuvers. Simple साफ बात आपने करी. What is wantlessness? What is materialism? What is the relationship between wantlessness and materialism in the topic? What is the topic saying about the relationship between wantlessness and materialism? ऐसे टॉपिक कहता है the philosophy of wantlessness is utopian, the philosophy of materialism is a chimera. ऐसे टॉपिक कहता है philosophy of wantlessness is utopian, where the philosophy of materialism is a chimera. अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहा है ये ऐसे टॉपिक? कैसे लिखेंगे हम इसको एक इंग्लिश की स्टेटमेंट में? अगर मुझे ये डिस्क्राइब करना, ऑब्वियसली ऐसे के टॉपिक रिपीट नहीं करूंगा मैं. आई विल नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट दी ऐसे टॉपिक. आई विल पुट इट इन माई वर्ड्स. जैसे आपने मटीरियलिज्म को और वॉन्टलेसनेस को इतने अच्छे तरीके से लिखा है, आप इसके रिलेशनशिप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? दैट इज द थर्ड स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन. Opposite of simplicity. How would you put that sentence? So here is what I would do. I would say that wantlessness and materialism do not serve to give a complete satisfactory answer, because as human beings we live in an internal world as well as an external one. And in order to survive and in order to thrive, we must equally participate in both. Something like that I would say. This is not the perfect statement, but इस टाइप का कुछ मैं यूज करता, मैं लिखता तो they both are not enough or satisfactory. बहुत अच्छा जानकार, बिल्कुल सिंपल और अच्छे स्टेटमेंट लिखे हैं आपने. और मुझे लगता है आपके स्टेटमेंट्स मेरे स्टेटमेंट से ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आपके पास कंस्ट्रेंट है, आपके पास कमेंट्स में ज़्यादा वर्ड्स की स्कोप नहीं है. सो यू आर राइटिंग ओनली व्हाट इज रेलिवेंट. अभी लैंग्वेज देखिए, it is simple and effective. This is what we need in the essay. Both values are extremities. Neelabha says. Priti says both are necessary evil and need to coexist together. बहुत अच्छा है, very good, very nicely put. अब मैं इंट्रोडक्शन में ये लिख दूंगा अगर बीच में, तो एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा उससे. Because I am now getting to the heart of the topic. मैं एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी करने के बाद अपना पॉइंट नहीं बनाऊंगा. मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि मैं क्या कर रहा हूँ इस ऐसे टॉपिक पे, एंड हाउ आई हैव डिकंस्ट्रक्टेड इट, हाउ आई हैव अंडरस्टूड इट, एंड हाउ आई विल आर्ग्यू फर्दर. मेरे इंट्रोडक्शन में क्लियर हो रहा है. बहुत अच्छा लिखा है प्रीति ने. Wantlessness and materialism are opposite to each other. None can acquire fully. Even when there is full wantlessness, one will have to depend on materialistic sources. अच्छा लिखा. Simple and nice. Easy to read, easy to understand. Dr. Priyanka has written, the need is wantlessness, but to thrive in society, we need both wantlessness and materialism in equal manner based on situation. Very nice. Achha. Why is the relationship important? Why is the relationship important? Why is the relationship between wantlessness and materialism important? How would you put this statement? So what I said earlier about the relationship, मैंने तो बोल ही दिया ये, I've covered it, but I'll say it again. What I would say is that the philosophy of wantlessness and materialism are both attempts at obtaining satisfaction and happiness, where they both target different domains of existence, one internal and the other external. It is very important for us to balance the two and to find the middle path if we are to find the problems of, and we have to face the problems of modern life, or something like that I would say. I don't know, it's a very good statement I just made, but ठीक है, average.
I would say something like that. To maintain a perfect balance, Krishna, Vauntlessness and materialism are both antithetical to each other. So you're describing the relationship for smooth sailing in the world. Yes, that is why it is important. Climate change के लिए important है. अब इसके ऊपर बहुत डिस्कशन कर सकते हैं. This discussion is what the essay is. ये जो अब इसके बाद जो डिस्कशन स्टार्ट होगी, that is the body of your essay. अब अगर मैं wantlessness को देखूं, if everybody becomes wantless, जो कि possible नहीं है, then how will the modern economy grow? The modern economy works on consumerism, it works on transactions, it works on the desire, that assumption. How do you think tourism works? How do you think any industry works? We don't want anything, then we will not progress economically, that is clear. But if you progress economically and if you do it very fast, then you enter into what is otherwise known as a rat race, where everything which is good about life starts to deplete. So it's always this balance. ज़्यादा इंटरनली फोकस हो जाएंगे तो बाहर की दुनिया इग्नोर हो जाएगी, ज़्यादा बाहर की दुनिया में एंगेज हो जाएंगे तो इंटरनल पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा. तो दैट इज व्हाट बुद्धा सेड व्हेन ही सेड द मिडिल वे, एंड दिस इज व्हाट वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज वेयर वी हैव टू एनालाइज द होल थिंग, टॉक अबाउट इट, डिस्कस, गिव आवर आइडियाज, प्रेजेंट देम क्लियरली एंड देन कंक्लूड. ये इस टाइप कैसे. पर आपने इस हैक का जो पर्पस था वो ये था कि यू शुड बी एबल टू राइट एन इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन लिखने की टेम्पलेट. आपको आगे समझ में, वर यू एबल टू राइट एन इंट्रोडक्शन, इफ यू जस्ट कंबाइन दीज 4 स्टेटमेंट्स इट विल बी देयर, you will be able to do it. Now another hack. In many essay topics, we should mention India और Indian example somewhere. तो बड़ी obvious ही बात है, पर किस टाइप के एग्जाम्पल्स. अब हर ऐसे टॉपिक में तो कंबाइन नहीं हो सकता है, तो देयर इज अ शॉर्टकट फॉर इट. अ शॉर्टकट इज दिस, VV. व्हेन यू विश टू टॉक अबाउट इंडिया स्पेसिफिक थीम्स, दीज आर द 4 थीम्स दैट यू कैन यूज. ये हर जगह फिट हो जाएंगे, यू विल बी एबल टू फिट देम एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर. दो 4 थीम्स आर विमेन, एनवायरमेंट, वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिक ग्रोथ. अभी हम वॉन्टलेसनेस और मटेरियलिज्म की बात कर रहे थे. अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, वी टेक इंडिया, जो जहाँ पे बहुत वी हैव अ ह्यूज हिस्ट्री, वी हैव अ हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ वॉन्टलेसनेस. ऑल दीज फिलोसफीज वर बोर्न हियर, वी locally produced philosophies which the whole world has adopted. So the India and Indians have been pioneers in this stuff. But present day India की बात करें तो ये जो materialism है, तो we can see that materialism is increasing in society. You go outside and you can see it. You can see Amazon Prime Day, you can see the malls bustling, you can see shops bursting, you can see traffic, you can see people consuming stuff more, consuming stuff faster. You can see the inequality in society. You can see all these things with the naked eye. But I don't want to think about the whole of India. I want a shortcut. मुझे shortcut चाहिए ताकि मैं वो यूज कर सकूं और एग्जाम्पल मुझे कुछ अच्छे से वो मिल जाए, कंटेंट के पीसेस जो मैं अपने ऐसे में यूज कर लूँ. क्या 4 थीम पे मुझे मिलेंगे? दीज आर द 4 थीम्स. आई कैन रिलेटेड टू विमेन, आई कैन रिलेटेड टू द एनवायरमेंट. वॉन्टलेसनेस और मटीरियलिज्म का मतलब डायरेक्ट लिंक है एनवायरमेंट के साथ. तभी हमने क्लाइमेट चेंज की बात ऑलरेडी करी. वीकर सेक्शंस के साथ एग्जैक्टली डायरेक्ट लिंक बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी which it produces. इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ तो डायरेक्ट लिंक है ही, जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. वॉन्टलेसनेस अगर नहीं होगी, then the economy cannot progress because it is based on demand and supply. Where does demand come from? Economic demand comes from human desire. और कहाँ से आएगी? Economies run and they work because people consume things. That is the counter argument. But then you have too much of it and it has all these various impacts. This is एक content hack. एक कंटेंट है. ऐसे बहुत सारे हैक्स हैं. दिस इज जस्ट अ फ्यू व्हिच आई सिलेक्टेड ऐसे आपको दिखाने के लिए, मोर ओवर जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि आपको कंटेंट के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे बहुत सारे हैक्स हैं कोटेशंस के बारे में, कोट्स कैसे यूज़ करे जाएं. बहुत सारे हैक्स हैं अबाउट सजेशंस, किस टाइप के सजेशंस यूज़ करे जाएं. बहुत इंटरेस्टिंग हैक्स हैं ये. पर आगे चलते हैं. लिंग्विस्टिक हैक्स.
This is something I have never discussed before. All these hacks my students know because they are in my book, the cheat book, ultimate cheat book of essay and answer writing. But ये जो linguistic hacks हैं, कुछ linguistic hacks I will discuss for the first time today. पहली बारी मैं कुछ डिस्कस करूंगा linguistic hacks, और उनमें से एक linguistic hack कैसे अच्छा लिखा जाए is the magic of repetition, ladies and gentlemen. अब I am not talking about content. अब मैं बात कर रहा हूँ content present करने की. मैं बात कर रहा हूँ content कैसे पेश करा जा रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, कैसे कैसे लिखा जाए कि पढ़ने में आसान हो, समझने में आसान हो. राइटर्स, पोएट्स, सॉन्ग राइटर्स, इवन रैपर्स. रैपर पता होगा ना, you know rappers. Eminem is a rapper. Jay-Z is a rapper. There are various rappers. There are now Indian rappers also. They use these techniques. हमको उनसे उनकी टेक्निक्स थोड़े से चाहिए to produce some lyricality कभी कभी, to produce an effect. वही बात हम एक तरीके से करें, सिंपल भाषा में एक इफेक्ट आएगा. बीच बीच में अगर कभी रेपिटेशन यूज कर ली तो इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा रीडर पे. जैसे आपको एक एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. दिस इज अ पोएम बाय रुडयार्ड किपलिंग. आई विल रीड द पोएम टू यू एंड यू जस्ट नोटिस हाउ ही यूजेस रेपिटेशन. आप बस सुनिए पोएम को, एंजॉय करिए, एंजॉय इट एंड नोटिस कि रेपिटेशन का कितना ब्यूटिफुली यूज किया गया है इसमें लिंग्विस्टिकली. द पोएम इज कॉल्ड इफ. बहुत मशहूर पोएम है, शायद कभी आपने सुनी भी हो, बट एनीवे टुडे वी विल सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, not talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools, if you can make one heap of all your winnings and risk it in one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they're gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can walk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that is in it, and which is more. You'll be a man, my son. The beautiful use of repetition. The poem itself is called if. See how he uses the word if. See how he uses the same cadence. See how he uses the exact same technique and how it produces the effect. See how I am producing the effect while I'm talking about it. See the effect of repetition of the mind. See how it trains us to think. See it how aligns our thoughts into focus. This is repetition. Simple tool. I use it all the time. Writers use it all the time. It's cheap, it's effective, works. You see, again, I again used it. That is the beauty of repetition, ladies and gentlemen. And that is one linguistic hack. And there are many. Let me take you now to one of my favorite hacks. This is a hack which actually people need. This is a hack जो होना चाहिए. मतलब ये सिर्फ हैक नहीं है, ये तो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की तरह है, क्योंकि इतने एसेस पढ़ने के बाद मुझे यही रियलाइज़ हुआ है कि बहुत सारे लोग दे डोंट डू जस्टिस टू द राइटिंग. बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं. दे कांट डू टू मच ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग. बहुत ज़्यादा थिंकिंग नहीं लगी होती है ऐसे टॉपिक में, एंड देन इट प्रोड्यूसेस जंबल. तब एक एग्जाम्पल है, एक पैसेज है. दिस इज अ स्टूडेंट हु इज राइटिंग मेंस दिस ईयर. एक पैसेज है, दिस इज ही इज राइटिंग एन एसे अबाउट समथिंग. एक पैसेज है उसका जिसको पढ़ते हैं.
देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, द प्रेजेंट एरा हैज बीन गाइडेड बाय साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बट दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू मेक लाइफ गुड ओनली व्हेन इट इज ब्लेंडेड विद ह्यूमन वैल्यू ऑफ लव. Einstein rightly said that science without humanity is just a volcano waiting to burn down all its surroundings. COVID-19 miseries realized ourselves that amount of love we have for our own near ones in such a tragedy. Love to save near ones and knowledge of databases, supply chains, help in critical supply of medicine, thus providing many people another chance in life. Dr. Dilip Mahalanobis invented I.R.S in refugee camp of Bangladesh Liberation War and did not patent it. It was called the greatest invention of the 20th century by Lancet Journal. ये पैसेज है इनका. अब मेरा जो क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द पॉइंट. बोलना क्या चाह रहे हैं आप? व्हाट इज योर पॉइंट? विप, WYP, whip. You can actually think of it as a whip, like a whip, and you have to use this whip when you write. आपको कभी कभार आप you will go in a flow. आप लिखोगे, आपको मजा भी आएगा. You will write and you will feel the creative juices are churning and you will want to write more and you'll write. But वो नहीं करना है हमको. You have to be to the point. You only have 1,000 words to explain a rather complicated topic, to cover its dimensions. So use the whip. Every passage you write, ask yourself, why am I writing it? What exactly is my point? And then write that point. अब इन्होंने जो लिखा है, क्या है इनका पॉइंट? इन्होंने वो पॉइंट नहीं लिखा है. He has not written the point. He has written various examples and he is assuming that the point will be understood. इनके जो एग्जाम्पल्स हैं आइंस्टाइन के बारे में और ORS डॉक्टर महालानोबिस के बारे में और कोविड के बारे में, वो किसी पॉइंट को बनाने की कोशिश करी जा रही है. ही इज ट्राइंग टू से समथिंग, बट व्हाट इज ही सेइंग? व्हाई डजंट ही से दिस इन एज मेनी वर्ड्स? इफ ही वांट्स टू से दैट science leads to the benefit of humanity, if that is what he wants to say, suppose, which I think this is what his point is, मुझे लगता है यही बोलना चाह रहा है वो इस ऐसे में, तो he should simply say it. He should simply say that science when used ethically brings good outcomes. Simple statement. Science without morality is hollow. Simple statement. Say what you are writing about instead of writing about it in examples. Put it in words. But in order to put it in words, you first need to have it clear in your head. That is why you use the whip. When you start to write down a paragraph, you use the whip before you write down the paragraph. And you have to be very clear in your mind about what you are writing. What is the point? You can use the examples. You can use everything you want. But point, you have to make the point in as many words. तो point छोड़ना नहीं है रीडर के लिए, वो लिख देना है सिंपल शब्दों में. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल टेक यू टू द लास्ट हैक ऑफ द डे. फिर बहुत सारे हैक्स हैं, अभी तो सिर्फ स्टार्ट है. लास्ट हैक ऑफ द डे, शॉर्ट इम्पैक्टफुल सेंटेंसेस. बहुत अंडररेटेड और बहुत यूजफुल हैक है, वेरी यूजफुल हैक that people don't use enough, which if used it creates a huge amount of effect in like minimum effort में. अच्छे राइटर्स यूज करते हैं इसको बहुत अच्छे से. Let us take an example. Let us read this passage. क्या लिखा है? The modern life has made humans a variable in a world full of enticements such as money, high positions, fancy objects, etc. These being limited have set a frenzy among people to grab the best with blind imitation. Although this has caused humanity to progress by leaps and bounds, it has also taken a toll on us in many ways. This is what she has written. Now, when I say short impactful sentences, जब मैं बोल रहा हूँ short impactful sentences, तो मेरा मतलब है आपके पैराग्राफ के स्टार्टिंग में या एंड में एक बिल्कुल छोटी सिंपल लाइन टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को समराइज करते हुए डाली जा सकती है. इट्स वन आइडिया. फॉर एग्जाम्पल, ये पैसेज हमने पढ़ा. इस पैसेज में जो राइटर हैं, जो दिस इज पैसेज बाय आकांक्षा, लाइक आई मेंशन, शी इज नाउ इन द I.R.S, गॉट सिलेक्टेड दिस ईयर, गॉट गुड मार्क्स इन ऐसे.
व्हाट इज हर पॉइंट, क्या बोलना चाह रही है? वो ये बोलना चाह रही है कि मॉडर्न लाइफ में कुछ फायदे हैं बट बहुत सारे नुकसान भी हैं। दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। और लोग एक दूसरे के पीछे, पीपल स्टार्ट इमिटेटिंग एंड दे लूज टच विद द मेन इंपॉर्टेंट स्टफ। यही बोलना चाह रही हैं, है ना? दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। व्हाट इज द शॉर्ट इंपैक्टफुल सेंटेंस व्हिच आई कैन ऐड? मैं कौन सा ऐसा शॉर्ट इंपैक्टफुल सेंटेंस ऐड कर दूं स्टार्टिंग में या एंड में, ताकि पूरी चीज एकदम क्लियर हो जाए और इम्पैक्ट क्रिएट हो जाए। सो हियर इज वन आइडिया, modernity is not free, full stop. Modernity has a cost, full stop. It's short impactful sentences, it doesn't do much, कुछ नहीं, but एक impact create करेगा वो बुलेट की तरह। इन्होंने लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, although this has caused humanity to progress by leaps and bounds, it has also taken a toll on us as mineral. The modern life has made humans a variable in a world full of enticements. Here is a short impactful statement. Attention is the new oil. Social media companies, these days, it's all about attention. If they can grab your attention, then their business will do well, supposedly. What is the most important precious resource of today? The most precious resource for today in the corporate world, in the business world, is your attention. That is true. Attention is the new oil. That these type of short introductions, short statements which create an impact, I suggest writing them. Maybe they sound a little bit extreme, but बीच बीच में ऐसे ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं। एक पूरे लंबे चौड़े ऐसे में where you are making these arguments and these, now her writing style is she uses long sentences and she is academic bent because she uses this type of writing. हम चाहें तो इसमें एक अफेक्ट डाल सकते हैं ऐसे शॉर्ट इम्पैक्टफुल सेंटेंसेस से, बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। Those were the hacks and various things I wanted to share with you. I hope you've learned something today, something interesting, something useful, something repetitive, something which makes your life easy, something which gives you a pattern and perhaps even just a framework to work on. I think is very important and will serve for a long way. But more importantly, the UPSC एग्जाम जो है, कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता है इस एग्जाम पर। अल्टीमेटली सिंसियरिटी से पढ़ने के बाद, आफ्टर वी वर्क विद अ लॉट ऑफ सिंसियरिटी, हमको एक हैकर मेंटालिटी पे आना पड़ता है। वी हैव टू कम टू अ हैकर मेंटालिटी एंड वी हैव टू फिगर आउट the shortest possible way to make the maximum possible impact. अब हर चीज में एक्सपर्टीज नहीं हो सकती, तो हम एक्सेप्ट कर ही चुके हैं, हमको पता है। चाहे हमारा परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड हो, वी मे हैव अ वेरी परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड, इट डजंट मैटर, क्योंकि यूपीएससी को फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज। हमको तो एग्जाम क्लियर करना है, और एग्जाम क्लियर करने के लिए वी हैव टू अडॉप्ट दिस स्ट्रेटजी। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट। ऐसे जैसी चीज में भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत लाइफ ईजी करती हैं। I hope that you had fun. I had fun. तो मुझे बहुत मज़ा आया आज, और बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, बहुत हेल्दी डिस्कशन थी, बहुत अच्छे इनपुट्स दिए आपने। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देखे मैंने आज, कुछ ऐसे इंट्रोडक्शंस देखे जो बहुत ही अच्छे थे, और अगर वही लैंग्वेज यूज़ करे गई ऐसे में तो अच्छे मार्क्स आएंगे, स्कोर अच्छा ही आएगा। सो इट्स वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी टू वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सोफिस्टिकेटेड क्राउड जैसा यूपीएससी एस्पिरेंट्स का होना चाहिए। Very nice audience you were today. Thank you very much. Stay tuned for the email. If you are not getting them, sign up for the free mentorship program. I will send you all these things. Don't worry Bhumika, I will share all these relevant things and बहुत कुछ है अभी तो. It is just starting. Thank you very much, ladies and gentlemen. Have a good night and I will see you soon.